हेलो गाइस। अगर आपने अभी अपना सीए फाउंडेशन का एग्जाम दिया है एंड यू आर वेटिंग फॉर योर रिजल्ट्स और जल्दी अगर आप कोई अपनी सीए इंटर कोचिंग लगाने वाले हैं तो दिस वीडियो इज फॉर यू। वेलकम टू द सीरीज ऑफ मिस्टेक्स टू अवॉइड व्हेन यू आर एनरोलिंग फॉर अ सीए इंटर बैच। सो टुडे वी विल फोकस ऑन द टॉपिक, आपको एक्सपीरियंस चाहिए या एक्सपेरिमेंट। यस, ये दोनों बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत बार ऐसा देखा गया है कि देर वेन एवर यू आर गोइंग टू टेकिंग एन इंपॉर्टेंट डिसीजन कि आपको सीए इंटर का क्लास कहां से करना है, ऑलवेज आस्क वो व्यक्ति के पास कितने इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है, हाउ मेनी बैचेस दैट पर्सन हैव टेकन। ऐसा बहुत बार देखने में आता है कि उस व्यक्ति को सीए बनकर 5 साल भी नहीं हुए। द कंसर्न पर्सन हैज नॉट इवन टेकन 1, 2, 3 बैचेस प्रॉपरली। लास्ट ईयर दे टुक 11th, नाउ दे टुक 12th, अब फाउंडेशन, अब इंटर ले लिया, अगले साल शायद फाइनल भी ले लेगा। Do not play with your careers. Do not play. I repeat, do not play with your careers. A big red flag. We are into inters and finals for the last 15 years. I've taken more than 30 plus batches. I've taught thousands of students. Make sure that you have that experience behind you. We know the trend. We know what are the priority concepts that needs to be done. We know the ABC of the subjects that we teach. We are in and out doing this for 365 days. We are focused and doing what we are best at. We are not experimenting with various levels. We are not doing experiments with various courses, and we are not treating students as our experiment rats. Never do that. So always choose experience rather than becoming an experiment for someone. So when you enroll for a CA intern coaching, ask how many batches have you taken till now? What amount of years experience you have to coach CA इंटर स्टूडेंट्स? क्या रिजल्ट्स हैं? ये एक बार देखना बहुत जरूरी है। इफ समवन सेज नहीं, मैंने तो कभी सीए इंटर अब तक लिया ही नहीं, दिस इज माय फर्स्ट बैच, you are becoming an experiment. You are not getting experience. Be alert. Make sure to avoid this red flag. Do not play with your careers. As we always say, if you are thinking C enter, think VD education. Thank you very much.